So as per the scale, 10 meter per second equals to 1 centimeter, 9.2 meters per second equals to 92 meters per second equals to 9.2 centimeter, and 24 meters per second equals to 2.4 meters per second. ये काफी इजी क्वेश्चन है ये। अल्लाह करे आप लोगों को एग्जाम्स में भी इतना ही इजी क्वेश्चन आ जाए ताकि आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लो। सो 9.2 सेंटीमीटर की लाइन अलोंग ईस्ट डायरेक्शन एंड 2.4 की सेंटीमीटर की अलोंग वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, एंड देन हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। वट एवर द लेंथ ऑफ दिस रिजल्टेंट विल कम आउट टू बी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 10 in order to find out the magnitude of that resultant vector. देन उसने हमें जो है इसके अंदर अब ये इजी वेक्टर्स थे, तो इसमें क्लियरली जो हमारे साथ जो 90 का एंगल बन रहा है वो किसका बन रहा था, जो वर्टिकल लाइन आ रही थी, ठीक है, ये इसका 90 का एंगल बन रहा था, और ये इसके साथ रिजल्टेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। सो इसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, इसको वाई कंसिडर कर लेंगे। और जो थीटा इनवर्स की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स y के अलोंग कौन सी क्वांटिटी आ रही थी, 2.4 विच इज 24, एंड x के अलोंग कितनी आई थी, 92। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूला लगाएं तो 24 स्क्वायर प्लस 92 स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ रहा है, 24 स्क्वायर प्लस 92 स्क्वायर इक्वल्स टू 95.7 95.07 meters per second, and फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली टेंजेंट इनवर्स का क्या फॉर्मूला आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स y के along quantity is 24, x के along quantity is 92, and the angle is 14.62। एंड बेटे इस चीज का आप लोगों के जो एंगल्स निकले होंगे आप लोग को खुद विजुअली पता चल रहा होगा कि द एंगल इज स्मॉलर, और वो एक स्मॉलर एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी वैल्यू से तकरीबन तकरीबन मैच हो रही होगी। दिस इज टू चेक योर आंसर वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज momentum. Enough with the vectors. Now we'll go with for the momentum. Momentum is the quantity is due to the motion, quantity or property of a body due to its motion. Momentum depends on two quantities, that is mass and velocity. P is equals to mv. From here we discuss Newton's laws as well. Newton's law, there are three laws that are not in our syllabus in direct methodology that we need to remember or memorize them, but we apply and use all of them. And Newton's first law is a body will continue its state of rest or motion unless an external force is applied on it. That is, there would be, if a body is moving, in order to stop it, we need to apply some external force. If the body is at rest, we need to apply force to keep to move it. So in either way, an external force is required to change the state of the body. Newton's first law is also known as law of inertia, that we use in our theory most of the time. Inertia depends on mass of the body, Greater the mass, greater would be the inertia. Lesser the mass, lesser would be the inertia. And if we define inertia, it is the property of the body. It is there, it's intrinsic property of the body. Property of the body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion.
वो नॉर्मली हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं ना कि व्हाई डू वी वेयर अ सीट बेल्ट एंड व्हाई वी आर पुश्ड फॉरवर्ड व्हेन sudden brakes are applied, because our body thinks that we are still moving in the forward direction. So that's our reaction of the body. So inertia would tend to keep moving in the direction in which it was already moving. So inertia, uh, sudden brake, अगर हम लोग बस में, if we're standing in a bus and sudden brake is applied, we're pushed in the forward direction. Why is that? Because our body still thinks that we're going in the forward direction. So anything will answer this with the help of inertia. Newton's second law is, what is Newton's second law? F equals to ma. When a force is applied on a body, we do not need to memorize these definition. I'm telling you again, I'm just writing it down for your own convenience, for your own learning. When a force is applied, acceleration is produced, which is, acceleration is directly proportional to the applied force, and acceleration is only proportional to the mass of the body. So A equals to F over M with a constant K, and F is equals to ma. So Newton's second, F is equals to ma is Newton's second law. And we know that when an object is falling freely, acceleration is replaced with g. So we also use the formula F is equals to W is equals to mg. F as a unit of Newton, so does the weight. Mass is in kilogram. G is given as meter per second square, so does the acceleration, meters per second square. G is basically known as the gravitational acceleration. So momentum and Newton's second law is what I discussed these because momentum and Newton's second law are related to each other. If we go for Newton's second law, F equals to ma, we know that A equals to change of velocity over time. If we put that into this equation, F would be m into v minus u over t. F equals to mv minus mu over t. This indicates the final momentum. This indicates the initial momentum. And we know that the change of anything is represented by delta. And what is the change? What it is change of momentum. So momentum is equals to this. So this force is known as average force. So if anything comes up in the exams and they ask us to find out the average force, वो normally momentum related question ही होगा. This is change of momentum. And this is time. So rate of change of momentum is equals to average force, and momentum equals to F cross T. This F cross T is known as impulse. How do we define impulse? A force that acts for a very short interval of time. Very short interval of time. From impulse, we'll write this formula as F cross T is equals to I. F cross T equals to mv minus mu. If I'll find time, मैं इनके questions भी आपको दिखा दूंगा. Then हमारे पास आ जाता है law of conservation of momentum. वो हमें क्या बताता है? Momentum before collision is equals to momentum after collision. So if we have two bodies of mass m1 and m2, for now we are taking the masses to be equal. This is m1, this is m2. It's moving with velocity v, and it is moving with velocity v2 in the same direction, such that v1 is slightly bigger than v2. So the momentum of first ball would be m1 v1, and the momentum of second ball would be m2 v2, as both are going in the same direction. So sum of momentum before collision, the moment they collide, this will apply force on this, and this will apply the reaction force. As the masses are equal, so the action and reaction would be equal. After collision, supposedly they keep on going in the same direction.
Now, in order to differentiate the velocity after collision, we'll write dash along with it. Dash like this. So its momentum after collision would be m1 v1 dash and m2 v2 dash. Again, I have put the plus sign in between because they are going in the same direction. So law of conservation of momentum tells us that m1 v1 plus m2 v2, that the momentum of two balls before collision is equals to momentum of two balls after collision. Again, if the two bodies are going in the same direction before collision, but moves in opposite direction after collision, so we'll write a minus sign. If bodies go in opposite direction after collision, and this is if bodies goes in same direction. What happens if the two bodies stick together? Then this formula will be rearranged as m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 plus m2 into v. This is for if bodies stick together after collision. So that is for momentum. Then comes the topic moments. Let's discuss moments alongside with it. Moments is defined as the rotational effect of force. When a force is applied on a body and the body moves in a circular motion, that force is known as moment. Moment is defined as moment is also known as torque and is equals to F cross D. Here D is the moment arm, F is the perpendicular force. For movement to exist, force must be applied perpendicular to the object. If this is a plank pivoted here, pivot point क्या होता है? This is pivot, a point around which the body rotates. A point around which the body rotates. ठीक है? So the distance from the pivot point to the point of application of force is known as moment arm. Here is the applied force, which is perpendicular to the moment arm. We can write it as point of application of force. अब greater the moment arm, let me write it down as D. Greater moment arm, lesser force will be required for movement. So if I have like the seesaw, if one has a bigger weight, it should be placed closer to the pivot, and the one with the lighter weight would be placed as far away from. So greater the moment arm, lesser would be the force required. Greater, let me write it down as D2 and D1. F1 is less than F2. So D1 must be greater than D2 for object to be in equilibrium. And for movement, keep in mind, force must be perpendicular. And if you want to apply lesser force, just keep in mind that the distance from the pivot point should be as greater as possible in order to apply lesser force, force for it. So here we discuss principle of movement. Principle of movement is given as
F1 D1 is equals to F2 D2 only if body is in equilibrium. That is not rotating, not going in linear motion. So what is the meaning of equilibrium? An object is said to be in equilibrium if the resultant force on it is zero and resultant movement on it on the object is zero. If both resultant force and resultant movement is zero, object is said to be in equilibrium. If the resultant force is zero, resultant movement is not zero, there would be circular motion. If resultant movement is zero, resultant force is not zero, there would be a linear motion. So for an object to be in complete equilibrium and to use this formula, principle of moment, we use the body must be in equilibrium. So here I have already drawn the diagram. F1 D1 is equals to F2 D1. So normally the student make a certain mistake. Do not make that mistake. That is the moment arm is always a distance from that particular force. Never if this is F1 D1, this is F2. This distance is not moment arm between the two forces. The moment arm would be from this force to the pivot point. Always, always, always. This is like this. And if the two forces are acting in the same direction, they would be added equals to, if there is no force acting on the other direction, this would be zero. If the two forces are acting in opposite direction, we will add a subtracting point from it. Because as the movement is a vector quantity, हमने scalar and vector के अंदर उसको study भी किया था. So we if the direction is same and वो similarly यहाँ पे हम लोग एक और point भी discuss कर लेते हैं जो हमारे पास free body diagrams होती हैं कि if the two forces are acting in the same direction, they gets added, and if the two bodies are forces are acting in the opposite direction, they get subtracted. और इफ यू गैस रिमेंबर फ्री बॉडी डायग्राम्स के अंदर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, हमें उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस भी करना होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस जो भी होती हैं. अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बाद हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आ जाता है. फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एज स्टेबल एज पॉसिबल वी नीड टू डिस्कस सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी. सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम ही होता है. द पॉइंट in a body where whole of the mass of the body is concentrated and where the weight adds up to that point is the center of gravity. If a force is applied on center of gravity, object stays stable and moves linearly. ठीक हो गया? For an object to be stable, center of mass should be low and base should be wider. So if base is as wider as possible and its center of mass is low, this would be considered as a stable object. We also have discussed another point that as long as the weight and contact force is in linear, object stable. If weight is to the left of contact force, object is stable again. But if weight is to the right of contact force, object would topple over. And regular shaped objects have center of mass exactly at their center. For circle motion, तो circle के बिल्कुल center में. If we have rectangle, तो rectangle के बिल्कुल center में. Then where the diagonals meet. If there is an irregular shaped body will draw holes at certain points and उन respective holes के accordingly हम लोग plumb line के help से lines draw कर देंगे. उसको हम उन होल्स के साथ सस्पेंड करेंगे और रिस्पेक्टिव जिस पॉइंट पे आके where those intersection lines are coming, so that would be the center of mass
of that irregular shaped object. Let me show you what plumb line is and how this process is carry forward. Just give me a second. Uh, इसके अंदर उसने ये irregular shaped object ले लिया, उसने different points पे hole drill कर दिए, and now it will ये इसको वो करेगा। देखो ये प्लम लाइन है, ये जो थ्रेड है ना ये प्लम लाइन है, ये इसको हैंग करेगा with the help of some support। अब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जो है, ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल यहाँ पे ये कर लेगा, लाइक ही इज शोइंग कि वो, अब ये देखो ये प्लम लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इट शुडंट बी मूविंग जब आप लाइन लगाओ, ठीक है। ये ऐसे लाइन लगा लेगा एंड इस तरीके से फ्रॉम ईच होल ही विल सस्पेंड द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसने एक दूसरे पॉइंट से उसको किया, अब ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा ना व्हेन इट विल स्टॉप मूविंग। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है ना, ये उसने दूसरे पॉइंट से सस्पेंड किया एंड प्लम लाइन के हेल्प से उसने उसमें क्रॉस लगा दिया। अब ये इसको एक और पॉइंट से करेगा, हैंग करेगा, ये उसने हैंग किया, और इस तरीके से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसका, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। ओके, पता है बन जा रहे हैं ग्रेविटी। ठीक हो गया बच्चों। अब साहब थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह फाइंड आउट प्लम लाइन क्या होती थी और ये क्या होता था, जी। बिकॉज यू आर हैविंग ट्रबल इनटू दैट। अच्छा जी, स्टेबिलिटी के बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट कौन सा रहता था बच्चों? हुक्स लॉ का एक पोर्शन था हमारे पास, स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड आई गेस, है ना? पहले भी आता है। अब स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, हुक्स लॉ क्या है? Force is directly proportional to the extension produced, provided limit of proportionality does not reach. We are familiar with force. Let's discuss extension and limit of proportionality. Extension क्या है? For if we have a spring with zero weight on it right now, this would be its original length. अब मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, so इसकी में जो ये चेंज इन लेंथ प्रोड्यूस होगी, this would be its new length. So change in length minus original length would be the extension produced. Hooke's law is given as F proportional to X and F equals to Kx. This K is known as spring constant. So the springs which are harder will have greater spring constants. From there, K equals to F over X. So harder springs will have, we could see clearly that K is inversely proportional to extension. So harder springs, if we have a graph like this, if we have steeper graph, this would means that spring is harder to stretch. And if we have a steeper graph, this means K is smaller. Spring is easily stretchable. जैसे हम in our ball points, the springs in our ball points will have low values of K, and the shock absorbers in our cars will have bigger values of K. Hooke's law, F equals to Kx, इसका ग्राफ कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास ऐसे कर्व आ जाता है, तो द पॉइंट एट विच दिस कर्व स्टार्ट इज नोन एज लिमिट ऑफ
proportionality, and limit of proportionality tells us that अगर हम इस point से further on force को increase करेंगे, there would be a permanent change in shape of the object, and this would be like this. Force versus extension. This is the one which has a permanent change in shape now, because we have crossed limit of proportionality of it. ओके बाकी स्प्रिंग्स के अंदर हमें पता है कि अगर स्प्रिंग्स हम पैरेलल में अटैच करेंगे तो उनकी एक्सटेंशंस हाफ हो जाएंगी, अगर हम सीरीज में ऐड करेंगे तो उनकी एक्सटेंशंस आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सटेंशंस ऐड करते हैं, इसमें जो है वो इक्वली एक्सटेंशन डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 10 सेंटीमीटर एक्सटेंशन थी तो 5 सेंटीमीटर वुड गो टू दिस एंड 5 सेंटीमीटर वुड गो टू दिस, और जब हम सीरीज में अटैच करते हैं तो एक्सटेंशन वुड बी डबल, इसमें एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, हाफ। इफ यू इनकाउंटर एनी क्वेश्चन लाइक दिस तो हम उसको इससे डील कर लेंगे। एक्सटेंशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक्सटेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ इक्वल्स टू के एक्स का फॉर्मूला आ जाता है कि हमने फोर्स टेबल्स वगैरह में कैसे कैलकुलेट करनी है। समटाइम्स ऐसे ओ लेवल्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो यू नो कि हमने सीरीज में कैसे डील करना है एंड पैरेलल में कैसे डील करना है। एंड हुक्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू स्प्रिंग्स, ये भी माइंड में रखना। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल टू स्प्रिंग्स, रबर्स के ऊपर क्यों नहीं आते। एंड लिमिट ऑफ जब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, दे आर ब्रिटल सब्सटेंसेस, एंड ब्रिटल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रीच करने के फौरन बाद ब्रेक कर जाते हैं, एंड डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद भी ब्रेक नहीं करते। सो हमारे फिजिक्स में विद रेफरेंस टू हुक्स लॉ ब्रिटल एंड डक्टाइल सब्सटेंस को अपने अपने माइंड में रखना है। ब्रिटल सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच breaks after limit of proportionality, and ductile which does not break after limit of proportionality. Then comes the topic of pressure. Pressure for solids is pressure for solid is given as force per unit area, and pressure for liquid is given as rho g h. Here rho is the density of the liquid or fluid, g is the gravity which is constant, and h is the height of the object. Here pressure is force and a is area. This is for solid, this is for liquid. So objects with wider bases would have low pressure values, and object with smaller bases, pointy bases, will have more pressure. That's why syringes have sharper जो है उनकी needles होती हैं, and lesser area would leads to more pressure, वो easily penetrate कर जाती है हमारी skin के अंदर। एंड जो सॉफ्ट एंड मडी एरियाज में हमने जब मूव अराउंड करना होता है तो हम लोग वाइडर टायर्स को यूज करते हैं, बिकॉज वाइडर टायर्स लीड्स टू लेसर प्रेशर। एंड समटाइम्स जो प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें अगर उन्होंने 4 टायर्स लिखे हुए हैं और ईच टायर इज ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने प्रेशर के टाइम पे इनको 4 से मल्टीप्लाई करके प्रेशर कैलकुलेट करना है। फोर्स उसने वट एवर जो भी उसने हमें फोर्स वहां पे गिवन दी हुई होगी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। बाकी प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस यही आते हैं, एरिया वर्सेस प्रेशर का रिलेशनशिप किस तरीके से डिस्कस करते हैं, एंड क्या इफेक्ट्स होते हैं। प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल्स एंड इसका यूनिट होता है न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। जो लिक्विड्स के केस में फॉर्मूलाज आते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन एज 101,325 pascals or 1.0 into 10 raised to power 5 pascals
and in terms of mercury, 76 centimeter of Hg and 760 millimeter of Hg is given as atmospheric pressure. Atmospheric pressure exert कैसे होता है हमारे ऊपर? क्योंकि particles in air when pulled down with due to the force of gravity, so that's how pressure is created. And when it comes to pressure in liquids, तो हम लोगों ने यहाँ पे यही माइंड में रखना है कि when it comes to pressure of liquids, तो हमारे पास यहाँ पे जो आते हैं, if we have multiple containers like this, and this, and all of them have same amount, same type of liquid into it, that is all of them have contained. So if they had equal heights, so no matter the volume of liquid into the container is, their pressure would be equal. So always keep this in mind. हमारे पास यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वैसे थर्मल में आता है, लेकिन समटाइम्स इनके साथ भी क्वेश्चन आ जाता है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. दिस इज द इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ, लेकिन प्रेशर के क्वेश्चन में भी ये आ जाता है. This is only applied when temperature is kept constant. So that's it for today. We have discussed most of the topic that is related to kinematics, circular motions and everything. And I hope if there's any question, just go ahead and ask me. Laughers. इसको जल्दी से देख लेते हैं. इन्होंने यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि हमारे पास वेक्टर डेटा क्या गिवन है, कि उसने हमें बताया कि टुवर्ड्स ईस्ट 92 मीटर है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर लेना फॉर दैट. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक हो गया. उसने कहा टुवर्ड्स ईस्ट इज 92 मीटर्स पर सेकेंड, और स्केल उसने हमें अगेन दिया हुआ है. एंड टुवर्ड्स नॉर्थ इज 2.4 टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक हो गया. अब दिस वाज माय वेक्टर, जो मैं स्केल के अकॉर्डिंगली 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. सो 92 किसके इक्वल होगा? 9.2 सेंटीमीटर के. एंड फॉर 24 सेंटीमीटर किसके 24 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा? 2.4 सेंटीमीटर के. अब मैं ईस्ट की डायरेक्शन के अलोंग जो है वो 9.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा, एंड 2.4 सेंटीमीटर की अलोंग नॉर्थ. ठीक हो गया. अब मैं यहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ कर लूंगा. इस रिजल्टेंट की लेंथ में ये कर लूंगा. सपोजिटली दिस केम आउट टू बी 5 सेंटीमीटर. तो अकॉर्डिंग टू स्केल 5 सेंटीमीटर into 10 मीटर पर